Good morning students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we will start with agent's duty on termination of agency. Termination of agency रो meaning काली हमें देखथिलु माने agency रो जहाँ भी purpose अच्छी सेटा accomplish हेले we will tell it as termination. माने कौन agency function accomplished. Agency function accomplished. Clear? Agency function जहाँ भी अच्छी सेटा accomplish हे गले then we are telling that agent's duty is said to be terminated. तो agents रो duty कौन रहबो जतलो agency function रे terminate हेला माने तमो जति purpose रे कोआ इतना सेटा accomplish हेला एबे agent रो next duty कौन तो section number 209 provides that when agency is terminated by the principal die principal जे भी अच्छे से मरी होला नले कौन हेला unsound mind हेला the agent is bound to take on behalf of the representatives of his late principal all reasonable steps for the protection and preservation of interests entrusted to him. माने जदि एजेंसी जहाँ भी अच्छी तार टेन्योर केते की थिला ना that was for 1 year गुटे अंडर पे तार एजेंसी ला थियारी हेला से मझरी कोन हला प्रिंसिपल जे भी अच्छी तार डेथ हे गला तो जे भी एजेंट अच्छी ता पाखरे गुटे मनर किछि जिंस अच्छी से आउ 3 मंथ्स बाकी अच्छी से जिंसला रिटर्न करिया पई तो से 3 मंथ्स से एजेंसी टर्मिनेट हेला एजेंसी बंद हेला काहेकि प्रिंसिपल रो डेथ हेला आमे काली गुटे जिंस पढथिलो एजेंट प्रिंसिपल किबा एजेंट रो डेथ हेले किबा अनसाउंड माइंड हेले ऑटोमेटिकली एजेंसी फंक्शन टा कंप्लीट हे जिवो कहिकरी तो प्रिंसिपल जेतु एडी मरि गला तो कौन करिया तार जो जिंसटा अछि से 3 मंथ्स पे रिमेनिंग 3 मंथ्स पे से कौन करिया सिक्योर करिकि रखिबो तो से कौन होची देखो तो एजेंट रो ड्यूटी कौन रहला ना एजेंट मस्ट take all reasonable steps agent must take all reasonable steps for कौन कोई से प्रोटेक्शन प्लस प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन आले कहले कोन ना सेटा सिक्योर करिक रखियो प्रिजर्वेशन माने कोन सिक्योर करिबा जिनसेटा सेफ जिमति रहबो सेटा देखिबो प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरेस्ट्स माने कोन जहां भी काम ताकू जोडा बताइ छि इंटरेस्ट एंट्रस्टेड टू हिम इंटरेस्टेड माने कोन ताकू ट्रस्ट करिक जो जिंस दिया है छि एंट्रस्टेड टू द एजेंट काबू एजेंट तो एजेंसी फंक्शन कंप्लीट हेगिर भी जदी रिमेनिंग टेन्योर टा रहउची देन इन दैट केस एजेंट जे भी अछि तार गुड्स गुडा को जहां भी ताकू दिया है सेटा से सेफली रखिबो ओके अल्टीमेटली से एजेंट सेटा होउची देन देखो टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी एजेंट जे भी अछि तार ड्यूटी होची एडा सब एजेंट रो मीनिंग हमें पढ़थिलो एजेंट हु वर्क्स अंडर एन एजेंट इज नोन एज अ सब एजेंट तो सेक्शन नंबर 210 provides that the termination of the authority of an agent causes the termination of the authority of all sub agents appointed by him fine जार भी माइक ऑन अच्छी प्लीज माइक ऑफ करो तो डाउन ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स जार भी माइक ऑन अच्छी माइक ऑफ करो टिके ओके फाइन सो सॉरी टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी रे हमें कोन पढ़थिले द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट जदी मेन एजेंट जे भी अछि से एजेंट रो अथॉरिटी जदी कोन एंड हे जोची इन दैट केस ऑल द सब एजेंट्स माने जति की भी सब एजेंट्स अछंदी सेमानंगर अथॉरिटी भी कोन हबो ऑटोमेटिकली एंड हे जिवो माने जदी असिस्टेंट अछि ता अंडर केतर सब असिस्टेंट गुडा को अछंदी असिस्टेंट को जदी हमें काम रो बाहर कर देबो तो सब असिस्टेंट गुडा काम रो अछंदी ले हम कहयगी ऑब्वियसली नहीं ठीक अछि ना तो सब एजेंट मानक अथॉरिटी भी सॉरी जिवो देन देखो एजेंट ड्यूटी सेक्शन नंबर 2
11 provides that an agent is bound to conduct the business of his principal according to directions. Please underline according to the directions given by the principal. ଯେମିତି ସେ directions କହିଛି ସେମିତି ଆଗ ତାକୁ କଣ ଯାହା ବି activities of the agency ଅଛି carry out କରିବାର ଅଛି. Or in the absence of any directions, in the absence of any such directions, according to the custom which prevails in doing the business of the same kind at the place where the agent conducts such business. जदि किछि भी से कहूनी ओनर से किछि डायरेक्शंस देनी हैला ताको गुडी जिंस को आइछि कोन तू ना मोर गुड्स जहा भी अछि तू सी पोर्ट को धर के पळा सी पोर्ट माने बुझछ तो जोडी कोन जोटू शिप स्टार्ट होछि तो से किछि डायरेक्शंस पर्टिकुलरली ताको देनी से कोन कहिछि जे से कहिछि कोन खाली तू शिप पोर्ट को धर के पळा तो शिप पोर्ट जहा भी अछि सी पोर्ट जहा भी अछि सेडी किछि रूल्स एंड रेगुलेशंस थिबो ना नै से कहियो कोन तमे एतिके गुड्स रखिबो एतिके पैसा डिपॉजिट करिवो डिपॉजिट करला पर पैकेजिंग ऊपर ना ठीक ठाक लिखिबो तो ऑल दिस थिंग्स उडा कोन सब जगह इम्प्लाइड से कहियोनी तो किछि भी जदी डायरेक्शंस दोनी तो कस्टमरी माने जो प्लेस ता से प्रिस्क्राइब करछि से प्लेस रे जहां भी रूल्स गुडा का एक्टिवेट हेइ गे अछि ऑल द रूल्स शुड बी फॉलोड बाय होम एजेंट बुझि पारला ना नै तो एजेंट ड्यूटी when the agents act otherwise जदि से माने सेडा छाडी के आउ को जिंसो करूची if any loss be sustained he must make it good to his principal and if any profit accrues he must account for ठीक अछि agents duty टा important mark करो and please note down the chart now. Agents duty agents duty two parts acts as per the acts as per the directions acts against the directions acts against the directions of whom na principal directions of principal acts as per the directions of the principal acts against the directions of the principal clear acts as per the directions of the principal तो directions of the principal हेला आडू कोन जदी ए भितरे gives specific directions please write down gives specific directions does not second part होची does not specify any directions specific directions जदि actually कले the agent must act according to the directions specified according to the directions specified ठीक अछि does not specify any directions
then agent must act as per the customary rules and regulations, as per the customary rules and regulations. Hela, this is the first point, this is the second point, and एटा होची हमर सब point 1 and sub point सी होची कोन number 1 in case of any loss or damages, our second case कोन in case of any profits, the profits हेले कोन हबो ना return to the principal, ठीक अछि प्रिंसिपल जे भी अछि तांको रिटर्न करि दो। जदि लॉस किबा डैमेजेस होछि कोन हबो the agent must incur for the damages occurred, बुझी पाला ना नहीं, incur for the damages occurred, clear? but जदि देखो से जेतळगु acts as per the directions करूची, like this is a basic point तमे चाहिले लिखि पारिबो, but माने एटा होची implied meaning, जदि एडी किछि प्रॉफिट से इनकर करछि, प्रॉफिट करछि तो obviously रिटर्न करबो, but से तार डायरेक्शंस रे एक्ट करला होछि तो who will incur it? Very good, principal will incur it, काहे कि से जेमिति कहछि से सेमिति सुनिछि, तो सुनला परे जदि किछि लॉस होछि तो एजेंट रो किछि भी दाय नै, ओके प्रिंसिपल विल incur the clear, बुझि पाला? This is a very important chart. एग्जांपल नीचे देखिबो, then देखो section number 212. Section number 212 provides that an agent is bound to conduct the business of agency with as much skill as is generally possessed by persons engaged in similar business unless the principal has notice of his want of skill. Hello, please underline as much skill as generally possessed unless principal has notice of his want of the skill. से जदि कहिला प्रिंसिपल जदि कहला कि मु जिमिति कहछि सिमिति करियो, मोर स्किल्स यूज करिकि तो एक्टिविटीटा कंडक्ट करिवो, देन ओनली एजेंट तार स्किल हिसाब रे काम करियो, नले कोन ता निजर स्किल लगा से यूज करबो, माने मनर ताको अकाउंटिंग एक्टिविटी रे बहुत किछि नॉलेज अछि एजेंट रो, फिर भी प्रिंसिपल कोन कहछि नाही मते तो देखैबो, मु वेरिफिकेशन करला पर तो जहां भी रिटर्न फाइलिंग वगैरह करो, जदि से एमिति कथा कहछि कोन नोटिस दउछि कि मोर स्किल्स यूज करिकि तो फर्दर एक्टिविटी प्लान कर, तो जदि प्रिंसिपल एमती किछि कहूची देन कोन हबो जानछ ना, देन इन दैट केस एजेंट जे भी अछि तार स्किल को से अल्टीमेटली फॉलो करिया पई बाध्य, क्लियर? The agent is always bound to act with reasonable diligence and to use such skill as he possesses and to make compensation to his principal in respect of the dire consequences of his own neglect, want of skill or misconduct, but not in respect of loss
loss or damage which are indirectly or remotely caused by such neglect, want or skill of misconduct. देखो से कौन कहूची the agent is always bound to act with reasonable diligence हैला ता मुंड पूरा खटेगी से काम करेगी से activity टा achieve करियर अछि but and to use such skill as he possesses and to make compensation to his principal in respect of the direct consequences of his neglect. जदि से negligent है कि किछि भी loss हैला तो who will be responsible? Agent आगा responsible हैला. Want of skill or misconduct but not in respect of loss or damage which are indirectly or remotely caused by such neglect, want or skill of misconduct. माने से देखो ultimately गुटे चीज कहूची negligence हैला. Negligence हैला. Negligence is of two types. Agent जानी करछ एजेंट नोइंगली करछ नोइंगली करले एजेंट आका पैसा दबो जदी से जानी पार हैला भूल रे हे गल जदी से मिस्टेक हैला कोन हैला ना पार्शियली जानची किबा जानी पारलानी किमिति कोन होउची कि समस्तंगर किछि किछि नेग्लिजेंस अछि तो होली जे भी एजेंट अछि से रिस्पांसिबल हबन आई थिंक इट्स क्लियर नाउ पूरा पूरी तार भूल हैला आगा से कोन दायी हबो जदी समस्तंगर किछि किछि नेग्लिजेंस अछि किछि किछि मिस्टेक अछि देन एडा गुटे लाइक एजेंट रो पूरा पूरी भूल हैले हमें कहि पारि Clear? So this is a basic point. Hello. Next देखो an agent. So इधर हो जाए हमारे examples. Section 213 provides that an agent is bound to render proper account of his principal on demand. जेतोलो को principal मांगिबो सेतोलो को से demand account टा देखिबो कि केमिति पैसा गला केमिति goods गला what are the activities he has conducted केति की receipt हला केति की payment हला सब जिंस कोन principal demand करले से जाईगी देखिबा पे बात obviously principal agent relationship केमिति से जिमति order करिए सेमति करबो जदि से order करियो goods से तो order goods दबो जदि से कहियो मते accounts देखो तो accounts देखेबो सेमति का होबो. Section 214 provides that it is the duty of an agent in case of difficulty to use all reasonable diligence in communicating with his principal and in seeking to obtain his instructions. माने जति भी instructions receive करिवो due diligence receive करिवो जति किछि questions पचारि अछि clarity पे तो he should ask माने से निजे आरो इंटरेस्ट देखि कोन instruction गुडा को सुनिबार अछि. These are all basic points ठीक अछि ना. तो आमर बेसिकली एजेंट्स ड्यूटी भितर आमे गुटे जिंस देखिलु कोन जहा भी अछि तार नेग्लिजेंस लागि जदी किछि जिंस होछि तो से कोन करियो से पूरा पूरी लायबल हे जिवो बट जदी प्रिंसिपल रो किछि भी नेग्लिजेंस अछि ता लागि किछि होछि तो से पूरा पूरी दायी हबनी. एंड एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप केमति से जेमति ऑर्डर करिवो सेमति करिवा पई हे बात. तापर देखो राइट्स ऑफ द प्रिंसिपल. The rights of the principals are described in section number 215 to 16. Section 215 provides that if an agent deals on his own account in the business of agency without first obtaining the consent of the principal and acquainting him with all material circumstances which have come to his knowledge on the subject, the principal may repudiate the transaction if the case shows either that any material fact, please underline any material fact, has been dishonestly concealed from him by the agent or the dealings of the agent have been disadvantageous to him. Okay, it's a very important point. देखो agent deals on his account in the business of agency माने agent जे भी अछि तारा पूरा पूरा मुंडो लगेगी से agency function carry out करछ. Then कोन हला देखो without first obtaining the consent of principal. Number 1 mistake तारा कोन ना principal रो किछि भी permission नै ली. Then कोन हला with all material circumstances which come to his own knowledge on the subject हला सियागा सब जिंस जानला सियागा सब material जिंस important जिंस सब जिंस कोन सियागा डील करला तो जेतळो को प्रिंसिपल जानिबो एजेंसी से कोन करे रेपुडिएट करियो माने ऑलमोस्ट ही विल कैंसिल इट ही विल रिवोक द ट्रांजैक्शन कोन पई इन केस शोस एदर एनी मटेरियल फैक्ट गोटे इंपोर्टेंट जिंसो जोडा कि प्रिंसिपल को कहिया रखिला से जिंसो ये डिसऑनेस्टी माने फ्रॉड हिसाब रे से कोन जदी लुचैछि देन और द डीलिंग्स ऑफ द एजेंट हैव बीन डिसएडवांटेजेस टू हिम माने आपको केंदी लॉस हेलाळ्या काम जदी से करछ देन कोन करियो प्रिंसिपल जे भी अछि से कोन ऑटोमेटिकली सिंसो रिवोक कर. तो राइट्स ऑफ द प्रिंसिपल कोन जदी एजेंट अछि एजेंट रो काम कोन प्रिंसिपल पे भल रे काम करिया हम काली पढथिलु जदी एजेंट प्रिंसिपल रो प्लेस रे थांदा से केमति ट्रीटमेंट हेई थांदा सेमति आगे से ट्रीटमेंट करियो प्रिंसिपल को. तो एजेंट जे भी अछि से कोन करिवो ना जदी दी प्रकार जदी फ्रॉडुलेंटली किछि कंडक्ट कर फ्रॉडुलेंटली आ भल हॉनेस्ट सब जदी हॉनेस्ट सहित कंडक्ट करला देन प्रिंसिपल जे भी अछि से किछि रिवोक करबन बट जदी फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट करला देन कोन करियो रेपुडिएट करियो किंबा रिवोक करियो रेपुडिएट और रिवोक. क्लियर. तो एडा होची राइट्स ऑफ द प्रिंसिपल.
बुझिला ना नहीं? Section 216 provides that if an agent, without the knowledge of his principal, deals in the business of the agency of his firm, instead of on account of his principal, the principal is entitled to claim from the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction. It's a very important. केमिति गुटे की इंपोर्टेंट पॉइंट एडी अछि ना फर्स्ट थिंग होची जदी एजेंट जे भी अछि प्रिंसिपल को न कोइ की बिजनेस ऑफ एजेंसी ता निजे अकाउंट रे कर देन जे अकाउंट करला ठीक अछि इंस्टेड ऑफ एन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल रो ना कोइ की ता निजे निजे रे गुटे बेले ट्यूशन स्टार्ट करला निजो ट्यूशन गुटे कला then the principal is entitled to claim from the agent any benefit which may have resulted from the transaction जदी से प्लेस रे प्रिंसिपल हिसाब रे थांदा तो केमिति कोन ट्रांजैक्शन रे प्रॉफिट पाई थांदा जदी से केस रे जति की पाई थांदा सेति केस जति की अमाउंट से क्लेम करि परियो एजेंट रो माने सिंपली मु कोच देखो एग्जांपल देखो बुझिबो ए डायरेक्ट्स बी हिज एजेंट टू बाय अ सर्टेन हाउस फॉर हिम ए जे भी अछि बी को कोन कयो सर्टेन हाउस टे मपे किनी किते तो बी टेल्स ए दैट इट कैन नॉट बी बॉट एंड बाइज द हाउस फॉर हिमसेल्फ से कयो नाइ नाइ एटा तम पे भल नै तम जातक एटा प्ले ये होनी क्लैश होचे एता होचे सेता सब जिंस जा कहि देबो कयो कोन तापर ये निजे किन देबो ना कोन पे ना तमरो मोर जो राशि उडा अछि सेटा अलगा तो मते बहुत भल से पड़िबो एमति कहि के से कयो ऑन डिस्कवरिंग दैट बी बॉट द हाउस से जतोड़ जानला से कोन जाई डाकिला ताको घर प्रतिष्ठा अछि आस ना को घर ना तमे जो घर देखैथिला से घर ते भल लेला तो compel him to sell it to A at the price he gave for it तो से कोन कहे चुपचाप मते माने मो पैसा रे तू मते से घरडा दे दे हला मो तते दे मो घर प्रतिष्ठा तू आसु कार्ड तो बांटी सारलो हला घर प्रतिष्ठा भोजीडा मो करी मो तते पैसा दे तू मते घरडा बिकी दे हला ए कोन कहे तो ए रो सेति की राइट अछि काहेंगी तांको भितर प्रिंसिपल एंड एजेंट रो रिलेशनशिप अछि तो से कहउछि कोन जदी से केस रे थांदा तो कोन हेई थांदा जदी से निजे आर्डर कर देला जदी से छाड़ी देला किछ असुविधा नै जदी आको मना करी ता निजे पे जदी से एक्टिविटी कैरी आउट कर दोची देन इन दैट केस ही मस्ट रिवोक करिकी से कोन करे छै रिटर्न करिबा पई बाध्य होछ क्लियर आई होप इट्स क्लियर कोच बरा बहुत स्लाइड पॉइंट ऑफ डिफरेंस अछि ईच सेक्शन भितरे तो दैट पॉइंट हैज टू बी हाइलाइटेड सेपरेटली क्लियर एजेंट रो राइट देखो प्रिंसिपल रो तो ये देखिलु एजेंट रो राइट होची एजेंट में रिटेन out of sums received on account of the principal in the business of agency all money is due to himself in respect of advances made or expenses properly incurred by him in conducting such business also such remuneration as may be payable to him for acting as agent तो एजेंट कोन जदी से काम करछि जण पई तो पैसा आनिबो पैसा रिटेन करिवाडा बाध्य हैला तो से जिंस कोन एडवांस हे परियो एक्सपेंसेस हे परियो को भी जिंस हे परियो जदी से पाया पे माने ता पाखरे रिस्पांसिबिलिटी अछि माने से अकाउंटेबल अछि गुटे जिंस पे तो से मागिबा दरकार हला एजेंट रो ड्यूटी माने राइट होछि एला से राइट टू अमाउंट माने काम करला रेम्यूनरेशन मागिबो तार राइट से सेकंड राइट कोन सब्जेक्ट टू सच डिडक्शंस द एजेंट इज बाउंड टू पे हिज प्रिंसिपल और सम्स रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट होछि केतिकी जिंस ता पे दरकार रखिला पर आ बाकी जिंस से कोन प्रिंसिपल को पेमेंट करदार अछि जदी किछि प्रॉफिट हला तो प्रिंसिपल एजेंट रो आगरे गुटे कॉन्ट्रैक्ट हेतिबो प्रॉफिट किछि भी होबो ले 50% तू रखु 50% मोर 50% रखिला पर से ताको बाकी जिंस रिटर्न करिबा दरकार ओके सेक्शन 219 provides that in absence of any special contract payment for the performance of any act is not due to the agent until therefore in absence of any special contract अछि नै तो पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट किछि एक्ट परफॉर्म हला से लागे किछि पेमेंट अछि नॉट ड्यू टू द एजेंट until the completion of such act but an agent may detain monies received by him on account of goods sold although the whole of goods consigned to him for the sale may not have been sold or although the sale may not be actually complete कौन कोछि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जेतळो हबो से पैसा रो लायबिलिटी रो जहां भी केस अछि सेटा केबे आसे जानछ ना जेतळो पूरा पूरी जिंसडा सेल हे जेबो पूरा पूरी अमाउंट ता रिसीव हो हला ए प्रोविजन डा बहुत इररिलेवेंट से कहिछि कि देखो until the completion of such act but agent may detain money received by him on account of goods sold although the whole of the goods consigned to him for sale may not have been sold or all the sale may not be actually complete तो से कोन कहछि सेल कंप्लीट हला न हला गुड्स गला न गला ए सब जिंस नै अल्टीमेटली गुटे जिंस जतळ पूरा पूरी गुड्स सेल हेला पूरा पूरी अमाउंट रिसीव कला देन जहां भी दबार अछि नबार अछि से जिंस जागो स्टार्ट ओके एति की जानिबो तो मु कहिथिली इंपोर्टेंट पॉइंट्स एथिरो ऑलरेडी एडा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आ गोटे कोडा कहिथिली एडा भी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट केस ला हे परिबो काहेंगी
मोस्ट इग्नोर पार्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर एटा इग्नोर करछन पिलाने बुझु नांदी अधा अधा लोक एटा बुझा पड़िबनी सेक्शन 216 इज क्लियर ना घर रो जो एग्जांपल टे देथिली जोडा इंपोर्टेंट अछि तार एग्जांपल मु करोछ देन एटा जो चार्ट करथिली दिस वन इज इंपोर्टेंट हैला काई जस्ट अ मिनिट हां एजेंट्स रो ड्यूटी तो प्रॉफिट हेले कोन करिवो एटा जो अछि ए पार्ट एटा भी क्लियर फाइन देखो नेक्स्ट मिसकंडक्ट ऑफ एजेंट जदि किछि भूल भाल कला ऑब्वियसली कौन हम से लायबल हबा हमें जानछु तो प्रोविजन बस रिवाइज करियो सेक्शन 220 provides that an agent who is guilty of misconduct, please underline guilty of misconduct in the business of agency is not entitled to any remuneration जदि किछि भूल भाल करला फ्रॉड करला तो ताकि किछि पैसा देबा कि हमें remuneration देबा कि सैलरी देबा कि नहीं in respect of that part of the business which he has been misconducted देखो गुटे बिजनेस अछि गुटे लोकर वाटर फैक्ट्री अछि फूड इंडस्ट्री अछि हला गुटे एजेंट को अपॉइंट कराइछि वाटर फैक्ट्री रे से कोन इलीगल जिंस कर दोथिला पैसा ठक्की दोथिला बट फूड इंडस्ट्री रे से सब जिंस जहा भी अछि ठीक ठाक करथिला तो फूड इंडस्ट्री रे जदि किछि सैलरी अछि तो से सैलरी ताको दे देबा हला 10000 रुपीस जहा भी ताको दे देबा एंड जहा भी वाटर फैक्ट्री अछि से रेम्यूनरेशन ता में देबन काहेकि दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस जोडा कि से फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट करला सेडार रेम्यूनरेशन हमें कट कर दो क्लियर बहुत सिंपल पॉइंट एजेंट्स लीन देखो in the absence of any contract to the contrary an agent is entitled to retain goods papers and other property whether movable or immovable of the principal received by him until the amount due to him for himself commission disbursement and services in respect of the same has been paid or account for to him माने देखो in absence of any contract to the contrary हला कोन हबो कोन नै सेडार किछि contrary contract जदि अछि an agent is entitled to retain goods से कोन करियो goods रखि देबो papers रखि देबो property रखि देबो रागी जेछि एजेंट जेतलो रागी जेछि कोन करियो ए सब जिंस रखि देबो of the principal received by him until the amount due to him जहा भी amount ताको बाकी अछि से जिंस देला भितरे हला से जिंस ताको देला जे कोन करियो से पेपर जा रखि देबो से कहियो कोन हम पैसा दे तो पेपर जाने हला सेमती माने कोन एजेंट प्रिंसिपल जदि प्रिंसिपल ऊपर एजेंट रागी हला तो कोन कहियो को गीत गायो जे जूते ले लो पैसे दे दो हैला तो इमिति से सब जिंस रिटेन करियो मूवेबल हो इमूवेबल हो जहां भी हो एजे प्रिंसिपल रो जहां भी ये अछि से रखिबो से कहियो कोन अमाउंट मते दे पैसे दे जूते ले कहियो हैला एडा होची एजेंट्स रो ली ऑब्लिगेशन ऑफ प्रिंसिपल टू एजेंट देखो employer of an agent is bound to indemnify please underline indemnify him माने कोन indemnify रो मीनिंग कोन करथली कोन कहितली indemnify रो मीनिंग पे नहीं actually not exactly it's pay indemnify ने कहले कोन ensure जो एडवर्टाइजमेंट वाला ensure नहीं एडा ensure माने कोन ठीक अछि से जिंसटा ensure करछ कि नहीं किछ असुविधा नहीं एडा दे देबा क्लियर कर देबा कि गारंटी दो कि this will happen all those things indemnify him against the consequences of all lawful acts done by such agents in exercise of the authority conferred upon him माने देखो employer of an agent employer जे भी अछि agent रो हैला employer of an agent is bound to indemnify him against the consequences of all lawful acts done by such agents in exercise of the authority conferred by him माने से कहियो ये एजेंट कहियो कि देखो मो सब जिंस ठीक ठाक करछि जदि समय खराब हैला आ ता लागि किछि भूल बाल हैला तो मोर कोन मोर लॉस हि जीवन नै तो से डरिबो एजेंट डरिबो ना नै से जिंस करिया पय तो ताको केउडे के एन्श्योर करिया रछि ना कि किछ असुविधा नै तोर जेति कि तू लॉफुली एक्ट कंडक्ट करछु से जिंस पय तू जेमति रेम्यूनरेशन रिसीव करू सेडा पय मो गारंटी रहबो इमति कोइ के एन्श्योर करिवो ना के एन्श्योर करियो एजेंट रो एम्प्लॉयर वेरी गुड एजेंट रो एम्प्लॉयर एन्श्योर कर ठीक अछि कोन एन्श्योर करियो ना जहां भी तू लॉफुल एक्ट उडागो करछु से लॉफुल एक्ट पे मो दायी रहबी कि तू किमति रेम्यूनरेशन ता पाइब क्लियर तेडा अछि ऑब्लिगेशन ऑफ प्रिंसिपल टू एजेंट काहेकि जदि प्रिंसिपल होछि गोटे बड़ लोक से कोन ले कर दे पारिबो बट एजेंट कहियो मो सब जिंस जाको जेन्युइनली करी के जाउछि स्टिल किछि हेई पारनी तो देन ही विल फील बैड Section 223 provides that where one person employs another to do an act, where one person employs another to do an act, and the agent does the act in good faith. देखो गोटे person employ हला जो गोटे act करिया
गोटे पर्सन आ गोटे पर्सन को एम्प्लॉय करले गोटे एक्ट करिया पे देन कोन हला एंड द एजेंट डज द एक्ट इन गुड फेथ जे भी एजेंट अछि से भलो भाबरे सेटा करबो the employer is liable to indemnify the agent please underline the employer is liable to indemnify the agent against the consequences of that act though it causes an injury to the rights of the third person देखो एटार एग्जांपल देखिबा क्लियरली बुझिया पे B at the request of A sells goods in possession of A हला B जे भी अछि से कोन A request करला आलको sells the goods in possession of A but which A had no rights to dispose of A पाखरे किछि भी राइट नथिला डिस्पोज करिया पे देखो एबो कोन हो B does not know this and hands over the proceeds to the sale of A पाखरे राइट नहीं फिर भी ये कहि देला फिर भी ये कर देला करिकी ताको सेल प्रोसीड्स दे देला देखो एबो कोन हो आफ्टरवर्ड C होछि के ट्रू ओनर पळा आसी true owner of the goods sues B and recovers the value of goods and costs. A is liable to indemnify B for what he has been compelled to pay C and B's own expenses. हला तो किए एडा करिवो ना A जे भी अछि ता लागि भूल हेछि तो से कोन करियो से एश्योर करिवो से एन्श्योर करियो कोन ना किछ असुविधा नै तो ऊपर केस हे गला तो मु ट्राई करी से केस टा केंदे रिवोक हबो मु ट्राई करी से एक्सपेंसेस टा केमते बियर हो बुझिलो पूरा एग्जांपल सुनलो तो भल से मत आंसर करे बी अच्छी ए रो रिक्वेस्ट बी सेल कर देला ए ट्रू ओनर नाही हला ए ट्रू ओनर नाही बी जानली बी आसी के ताको सेल ये कर देला तो सी जे भी ट्रू ओनर अच्छी सी आसी के केस करला का ऊपर बी ऊपर डायरेक्टली बी ऊपर करला काहेकि से जिनसडा बिकिले कहिगे एबे के एश्योर करियो के रिसीव करियो माने के एन्श्योर करियो कि ए एन्श्योर करिवो काहा को बी को कोन एन्श्योर करिवो expenses देबी एंड तो केस टे केमते रेबो so it's a very important case now हैला clear तो ए पॉइंट section 223 is important मु कहितली एजेंसी भितरे बहुत किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स अछि हमर तो देखो section 225 provides the principal must make compensation to agent in respect of injury caused to such agent by principal amount of skill देखो प्रिंसिपल कंपनसेशन दबो जदी सीएटा को बेसी बाउंड करी ये भल पिलाडा टिके बेसी सुन देगी जदी किछि भूल हे वाला हैला न सुने की भूल हेले एजेंट दबो बेसी सुने की भूल हेले के दबो तमे कहि जे मु करली मोर एबे हे लाइन इंजरी की नेग्लेक्ट की जहा भी के दबो पैसा ऑब्वियसली प्रिंसिपल दबो कोन दबो से जहा भी दबो ताको कंपनसेशन कहबो देखो गोटे जिंस मार्क करो प्रिंसिपल जतलो को दोछि सेटा कंपनसेशन बट एजेंट जतलो दोछि सेटा पेनल्टी वेरी गुड सेटा पेनल्टी बुझिला कोन पे कंपनसेशन एति पे गोटे बड़ अथॉरिटी लोक देखो एटा कॉमन पॉइंट लॉ नै बड़ अथॉरिटी लोक जतलो को नॉर्मल लोकान को माने नॉर्मल पीपल को जदी किछि दोछि देन इट्स कंपनसेशन माने गवर्नमेंट आमो को देली कंपनसेशन बट आमे गवर्नमेंट को देले दैट्स पेनल्टी बुझिला तो सेम जिंसडा एडी इंप्लाई होछि तो वर्ड गुडा को मन रखिबो एटली माने एग्जामिनर माइंड रे गुडा भलो इंप्रेशन क्रिएट करे क्लियर Section 224 provides that where one person employs another to do an act which is criminal, please underline criminal act. Good person employ करुची, आउट person को criminal act करिया पाई. The employer is not liable to the agent. The employer is not liable to the agent either upon an express or implied promise to indemnify him against the consequences of the act. देखो केते बेकरिया जिनसडा हला प्रिंसिपल कहि दोची एजेंट को तू ताप जाई मार दे हला मारला परे से कोन सी कहला नै किछि केस होबनी किछि नै देखिया हला से बहुत खराब लोकडा ताको से मरिया दरकार एता से सब कहि कि ताको बुझी देला एंड से पर्सन जाई कि मार देला वंस मारला परे चलो केस हला ये कहला कि तमे कहलो मो मारले बोले तमे के मो तो फर्स्ट टाइम देखछ तम चिन्नी तो मो इदि कहले लॉ कहियो कि तू करलो तो किछि नै लॉ एडा पे तुम किछि सेफ्टी दोनी प्रोविजन सेटा का कोच देखो से कौन कोची ए एम्प्लॉयज बी टू बीट सी देखो लॉ मोड़े एते डीप एग्जांपल नहीं से कोच हां बाड़ी ही पड़ास एंड एग्रीज टू इंडेमनिफाई हिम अगेंस्ट ऑल consequences से कोची कोन तू त बाड़ी आसे कोन हले मु देखि मु तो थी एडी आउ हला बी देयर अपॉन बीट सी से जे कुट्टी पड़ासला ताको and has to pay damages to C for doing so A is not liable to indemnify you for the losses हला तो हाथों ता चिंग हला तेरा हाथ है उसका मुंह है तेरा थप्पड़ वो खाया मेरा क्या मैं तो कोई नहीं मुझे क्या मैं तो रैबिट हूँ हिंदी से कोची
हैला इमिति कहला बेलू तो लॉ भी कहूँ कि ए इज नॉट लायबल टू इंडेमनिफाई माने ए किछि ना ए बहुत भल पिलाड़ा से बस कहि देला इंडिया का ताको गोटे डेयर मिलला तो से कहि देला हैला लॉ भी ताको सपोर्ट करछ तो अल्टीमेटली का बुद्धि रहया दरकार एजेंट को माने आमे गोटे पॉइंट रे पढ़थिले ना एजेंट तार ड्यू डिलिजेंस नै गिरी ड्यू डिलिजेंस नै कोन करिया से इंक्वायरी करिया से पॉइंट ता कि केमती होची कोन होची कहि हाँ ना नहीं से करिया कथा से जानिबा कथा कि ताको कोन पे मु बाडे से तो मते किछ करनी हैला कौन पे बाड़े एडा गोटे अनलॉफुल एक्ट क्रिमिनल एक्ट तो मते सिक्योरिटी रहिबनी तो से जिंस भाबी करथांदा तो दैट्स व्हाई लॉ कोन कहूची कि ए केस रे से लायबल नै तो एडा तुम गोटे सान क्वेश्चन हिसाब रे आसी परियो काहेकि जनरली पिला ने कोन भाबी ना ए दबा कथा ए ये करिया कथा बट सेटा फॉल्स ही जिवो ना तो टिके हटके पॉइंट अछि तो प्लीज मार्क मन रहि जिवो तम पॉइंट Section 226 provides for the enforcement and consequences of agents' contract. Contracts entered into through an agent, obligations arising from acts done by an agent may be enforced in the same manner and will have the same legal consequences as the contracts had been entered into and the acts done by the principal in person. Enforcement and consequences of agents' contract. Contracts entered into through an agent and obligations arising from acts done by an agent. Hela contracts enter kiye kala agent through re and obligations arising from acts done through agent. Obligations माने कौन responsibility कौन arise हला may be enforced माने कौन may be activated or carried out in the same manner and will have same legal consequences. जे भी करू act जदि किए करछि तो legal consequences almost same आगर रहबो as if the contracts had been entered into and the acts done by the principal in person. एजेंट करू प्रिंसिपल करू जदि का चापड़ा बाड़ेले से उल्टा चापड़ा आगा बाड़ेबो ना तो लीगल प्रोविजन भी सेमती आगा जदि ये करले पेनल्टी लाग से करले पेनल्टी लागिबो हां ना नहीं तो सेटा कोन अलगा कहया पॉइंट की नहीं देन देखो when an agent does more than he is authorized to do हला से टिके भारी भल लोक फर्स्ट होचंदी गुड तापरे भल तापरे बड़ लोक तापरे भारी बड़ भल लोक हला तो ए जो सेक्शन नंबर 227 को सेटा फोर्थ कैटेगरी लो जेतिकी कुआई जे सेतिकी करले तो भल लोक कळी जगरे सेतिकी हेई पारे से कहूची कोन ना डस मोर देन ही इज ऑथराइज्ड टिके बेसी लाइक सिंसियर एबे एबे सीएमए फाइनल की कोन क्लियर करथे तो बेसी एक्टिवेट ही जेछि से कहछि कोन ना ताको जेति कहछि ताड बहुत अधिक करतेला do and when the part of what he does which is within the authority can be separated therefore please underline can be separated from the part which is beyond his authority so much only of what he does as is within his authority is binding as in between him and his principal se koji kona when agent to koyo nauchi premium for the policy sorry laina it's incomplete jinsoda incomplete deichi se dekho example first dekhya A being the owner of a ship and cargo authorizes B to procure an insurance. से कोई चीज़ कौन 4000 टका insurance कर दे मो ship पे. B procures a policy for 4000 and ship and another for the like cargo. हला ताको ship खाली को आइतला से cargo पे ले कर देलो. A is bound to pay premium for the policy on the ship but not the premium for policy on the cargo. से कोई कौन तो काउ पचरी करलो. हला एते भारी बड़ भल लोक हेला हबनी हला तोर क्वालिफिकेशन एते बेसी हेला हबनी जेतिकी दरकार सेतिकी बस पिलाने थाउचंदी ना के टिके लाइक ओवर एक्साइटेड पिलाने हमर इंटरमीडिएट रे जतो से 7 रे 5 टा क्वेश्चन कहिया से कहि मु 6 टा लिखि आसी काळे मते अधिक मार्क मिल जाय एडा नाले सेडा कोडा भल लागले से दबो मु इन आंसर उडा सुनछि हला मोर जे स्टूडेंट माने थिले फर्स्ट बैच रो दे यूज्ड टू से कि आमे 6 टा क्वेश्चन अटेंड करि आसलु लॉ रे ना आई आस्क व्हाई कोन पे करलो ना ताको जदि फिफ्थ क्वेश्चन भल लाग रे सिक्स्थ देखियो कहले से मेन्यू कार्ड देखुची कि से आइटम भल लागिले एडा देखियो तार जतो 5 क्वेश्चन सॉरी हला ही विल नॉट गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन ओनली अनलेस एंड अनटिल तमे गोटे क्वेश्चन काटिचो से काउंट करी मैंने मार्किंग दबो ना तो एडा होचे भारी भल अगेन ए सेक्शन नंबर 227 रे सेडा कोच शिप पे तो इंश्योरेंस करा कयो माने शिप पे इंश्योरेंस को आइतला तो कार्गो पे का पे करलो तो कार्गो नहीं सेडा हला तो पैसा नहीं तो इंश्योरेंस नहीं कौन पे करलो से कौन ले लॉ कौन कहूची ना जेति के अथॉरिटी अछि सेति के अथॉरिटी पे से पैसा दब हला एति के आगे कहूची सेक्शन नंबर 228 provides that principal is not bound when excess of agent's authority is not separable हला जदी देखो से कहि थांदा कोन नै शिप एंड कार्गो दीड जा मिसियागा इंश्योरेंस अवेलेबल अछि तमा सिटी पे नाले इंश्योरेंस अवेलेबल नै
तो से केस रे कोन सेपरेबल नै से बाध्य हे की करला से कोन जानी करला कि बाध्य हे करला 1000 रुपीस एक्स्ट्रा हला पछे दीडा जा मिसी करला तो से केस रे कोन प्रिंसिपल टा ये हेबार अछि where an agent does more than he is authorized to do and what he does beyond the scope of his authority cannot be separated from what is within the principal is not bound to recognize the transaction देखो कोच कोन A authorizes B to buy 500 sheep per annum. B buys 500 sheep and 200 lambs, one sum of 6,000. A may repudiate the whole transaction. हला एडा कोन हेई पारिबो कि नै से कहियो मोर छुआ अछि कले छुआ दरकार नै खाली शिप्स दरकार आले कले हबो शिप दरकार कले हबो नै ना तो ट्रांजैक्शन इज इनसेपरेबल तो से केस रे डिफरेंट हिज क्लियर माने बहुत बेसिक पॉइंट उडागो म अगेन कहूची प्रोविजन हिसाब रे any notice given to or for info or information obtained by the agent please देखो any is given or information obtained agent provided it be given or obtained in the course of business transacted by him for the principal shall as between principal and third parties have the same legal consequences as if it had been given or obtained by the principal then again same point कोची example देख दियो बेटा A is employed to B to buy from C certain goods. A कौन करला B को कहला कि C रू किछि goods केने दे of which C is the apparent owner. Okay, C होछि apparent owner and B buys them accordingly. In the course of the treaty for sale, please underline treaty. Treaty माने कौन? Notice. Notice किबा गोटे contract. A learns that the goods really belong to D. हला A कौन करला जतले से इंक्वायरी करला टिके मुंडो लगेला तो जानला कौन D होछि रियल ओनर एबे कौन हबो but B is ignorant of the fact. B को कहले से सुननी हला तो B is not entitled to set off a debt owing to him from C against the price of the course से कौन कोची B is not entitled to set off a debt owing to him from C माने ताको किछि दरकार नै C को किछि सेटलमेंट करिबार तो against the price of the course obviously से सुनो न सुनो लॉ मात्र ताको कोची कोन ताको किछि बाध्य नै से जदी देई देला तार को सी को पैसा दे देला पैसा के मना करियो मना करियन बट लॉ होची कोन ही इज नॉट एंटाइटल्ड माने ताको किछि दरकार नै ताको दबार ऑब्वियसली जेतना हमें जानलु कि सी रियल ओनर नै कोन पे हमें दबागी ये सुनलानी न सुनलानी सेडा अलगा कथा दैट्स टोटली डिफरेंट तो से सेडा कुछ in the absence of any contract to the effect an agent cannot personally enforce contracts entered into him on behalf of the principal nor is he personally bound by him such a contract shall be presumed to exist in the following case से कोची कोन देखो in absence of any contract किछि contract नै से केस रे कोन हबो an agent cannot personally enforce contracts personally से enforce करबनी contracts entered into by him on behalf of the principal personally से करि परिबनी contracts unless and until principal coach nor is he personally bound हला principal कहला जे ता ऊपर किछि contract नै ता ऊपर किछि liability नै such a contract shall be presumed to exist केबे presume हे परिबो now where the contract is made by an agent for the sale or purchase of goods for a merchant resident abroad हला sale or purchase of goods for a merchant resident abroad जदि abroad रे गोटे resident अछि ता पे किछि जिंस करिबार अछि sale किबा purchase करिबार अछि then where the agent does not disclose the name of the principal hela agent je bi achi principal ro name disclose karoni then where the principal though disclosed cannot be sued बुझि पाला sue हेई पारनी देखो गुटे जिंस कोची रेसिडेंट बाहर अछि तो ये बाउंड कैरी आउट करिया पे जदि प्रिंसिपल एमिति स्टेट रे अछि जेंति कि से किछि एक्टिविटीज कैरी आउट करि पारनी तो एजेंट ता एक्टिवेट करबो हला जदि प्रिंसिपल भी भलो अछि एजेंट भी भलो अछि तो से जेंति कहबो सेमति कहबो बुझिला एंड जे भी रेसिपिएंट अछि समस्त जदि एडी अवेलेबल अछंती तो जेंति हेबा कथा सेमति हबो बट जदि जे भी रेसिपिएंट अछि से कोन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एनआरआई अछि तो से केस रे कोन हबो से केस रे agent has to take into effect jinso right of the parties to a contract made by agent not disclosed if an agent makes a contract with person who neither knows nor has the reason to suspect that he is an agent his principal may require the performance of the contract but the other contracting party has as against the principal the same rights as he would have as had as against the agent if the agent had been principal देखो से कोची कोन rights of the parties to a contract made by the agent not disclosed hela parties ye bhi achhanti agent disclose karne ki tanko right kon if an agent makes a contract with a person who neither knows or has reason to suspect that he is an agent mane agent ki se mane jaan nandi re third party je bhi involve hochi se mane jaan nandi his principal may require the performance of the contract but principal kochi se lokano ki tame se contract perform karo but the other contracting party has as against the principal same rights जदि से एजेंट ही थांदा जेमिति राइट्स मिल थांदा सिमति आगा राइट्स मिल
देखो सिंपल जिनस से बहुत भूले कहला एजेंट अच्छी एजेंट 3 जन प्रिंसिपल कहछि आउ 3 जन को ताण इंश्योरेंस कंपनी कहछि रे मो से माने कोन करन ताको काम कोन पॉलिसी बिल्ड करे तो एजेंट माने जे भी पॉलिसी बिल्डर से भी अच्छे ताके कोन कहिए कि आमे पॉलिसी बंद होचु कि आमे तम लेवल रो कहयनी तमे जदी इंटरेस्टेड अछो ऑफिस आसो आमे तमो वर्क टा असाइन करू तमे पॉलिसी बदे लोकान तो किए प्रिंसिपल ब्रांच मैनेजर होची प्रिंसिपल एरी तो से कोन कहयो जे ना जे भी एजेंट माने अछंदी एमानु सेति की जेति की सैलरी सेमानु सेति की सैलरी एमानु जेति गाड़ी सेमानु सेति गाड़ी तेडे कोन अलगा कहया जिंस की नाही तो से सेम पॉइंट टा होची होप इट्स क्लियर बुझला समस्त को बुझला Then the principal discloses himself before the contract is completed. The other contracting party may refuse to fulfill the contract. Hala, jodi se koi dela, se refuse kar dela. Then, if he can show that if he had known who was the principal in the contract, or if he had known that the agent was not a principal, he would not have entered. देखो से कहलो कयो कोन ना जे भी एजेंट अछि से प्रिंसिपल ना आली मु जानथिले मु जॉइन हेई न थांदी से ओनर भाबी कि मु जॉइन हेई गली तो मु एतरे रहयो चाहुनी बोली जदी से लोकडा कहि देला देन सेडा से जाई परिबो छाडी के जदी से जानिला पारे मध्य से कहला कि कोन नै से ओनर हो न हो मते पैसा मिलले हैला मु मोर कॉन्ट्रैक्ट करबी जदी से सेमती कहउची देन से कॉन्ट्रैक्ट सिमती आगा जब बहुत बेसिक पॉइंट उडागो हैला क्लियरली अंडरस्टैंड करियर अछि क्लियरली एनालिसिस करियर अछि where one man makes a contract with another, neither he knowing nor having reasonable ground to suspect that the other is the principal, if he requires the performance of the contract, can only obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between the agent and the other party to the contract. ठीक अछि एडी से कोन कहउची ना जदी से लोक जे भी इन्वॉल्व हेगी अछि थर्ड पार्टी से पर्सन को से जिंस जाना नै से पर्सन को से जिंस जाना नै कि से परफॉर्मेंस टा केमिति एक्टिवेट करिबार अछि तो तार राइट्स एंड ऑब्लिगेशन उडा स्टिल थिबो ना नै जदी प्रिंसिपल लाइक प्रिंसिपल एजेंट अछंदी प्रिंसिपल एजेंट जेमति रहया कथा सेमति रहिबे बट द थर्ड पार्टी जे भी अछि तार राइट्स एंड ऑब्लिगेशन उडा आंकर चेंज हेबा लागि किछि चेंज होबो कि नै ऑब्वियसली नै तो से सेडा कोच देखो A who owes 500 to B sells 1000 worth of rice to B A कोन B को O कोच माने कोन तार पैसा पाखरे अछि तो B sells 1000 rupees worth of rice sells 1000 rupees worth of rice to B हला A जे भी अछि से 1000 rupees worth rice sell कर देला A is acting as an agent for C in the transaction गोटे ट्रांजैक्शन रे C को एजेंट हिसाब रे काम करछि but B has neither knowledge nor reasonable ground of suspicion that such is the case C cannot compel B to take the rice without allowing him to set up A's हला तो अल्टीमेटली एडी कोन कहछि से जो भी जिंस हला जे भी जोड़ा भी जानछि से कंपेल करि परियोनी कि तू बाध्य होई कि मोर राइस टा ने पूरा पूरी डेट सेटल न करी हैला डेट सेटअप करी कि जहा तू नउछु नेली कहि कि से कहि परियो बट पूरा पूरा जिंसडा तू डेट सेटल न करी कि बाध्य होई कि नेली से कहि परियो क्लियर then se kochi where the agent is personally liable a person dealing with him may hold either him or his principal or both of them liable माने से कोची agent जेतरो personally liable होची तो से केस रे a person dealing with him जे भी पर्सन डील करछि may hold either him or principal or both of them liable एजेंट जेतरो पर्सनली लायबल अछि जदी किछि भूल भाल हैला तो से जो लोक जार इंजरी हैला किबा डैमेजेस हैला से एजेंट को भी ब्लेम कर परियो प्रिंसिपल को भी ब्लेम कर परियो ऑब्वियसली से रागी के थेबो तो का वाले ब्लेम कर परियो when a person who has made a contract with an agent induces माने induces the agent to act upon the belief that the principal only will be held liable से कौन कहउची ना जदी किछि भूल होला प्रिंसिपल को आगा कहियो हला मते किछि कहियो नै or induces the principal to act upon the belief that the agent only will be held liable he can afterwards hold liable the agent or principal respectively देखो से कौन कहउची whenever a person who has made a contract with an agent जे भी पर्सन अछि हला जो पर्सन ए कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करौची माने से होची गोटे थर्ड पार्टी टू द एजेंसी फंक्शन से कहउची कोन से बाध्य करौची कि इधर एजेंट रो आगा बोल एजेंट को धरिबो प्रिंसिपल को छाड़ देबो किबा प्रिंसिपल रो आगा बोल एजेंट को धरिबो प्रिंसिपल को धरियो एजेंट को छाड़ देबो जदी इमति किछि से कहउची हेले से जिंस जेतडो से लोकडा जानिबो देन कोन करबो से ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स होल्ड लायबल द एजेंट और प्रिंसिपल रेस्पेक्टिवली जदी गोटे माने मुंड थिबा लोक हेथियले कले से जानला परे का को धरियो ना जो पर्सन कहछि ताको धरिबो कि तू मते फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन दोथिलो कहि बुझि पालो जदी से गोटे प्रिंसिपल रो सपोर्ट नोची किबा एजेंट रो सपोर्ट नोची जान जानि गिरी किछि न हेगिरी तो से का को होल्ड करिया का को रिस्पांसिबल ट्रीट करिया ना जो पर्सन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करछि ठीक अछि ए जगह देखा अन इंपोर्टेंट सेक्शन गुडा हमरो टिके गाली ऊपर ऊपर देखिबो
A person untruly representing himself to be unauthorized agent. Untruly representing माने कौन? Untruly representing माने pretending, acting. Authorized agent of another and thereby inducing a third person to deal with him as such agent is liable if his alleged employer does not ratify his acts to make compensation to the another in respect of any loss or damage which he has been incurred by so dealing. देखो एवढा सब बहुत लंबा लंबा प्रोविजन गुड़ाक हम एग्जांपल देखिबा 236 235 236 and 237 होची प्रिटेंडेड एजेंट भितरे हला एग्जांपल देखि कि पुणी आउथरे सेरी जिबा A consigns goods for B for sale and gives him instructions not to sell it under a fixed price. गोटे प्राइस तळगु तू केबेले बिकु नली से ताको कहिछ. C being ignorant of B's instructions enters into a contract with B to buy the goods at a price lower than the reserved price. A is bound by the contract. कौन पे बाउंड हैला सी ना ही इज अ प्रिटेंडेड एजेंट हियर. जे भी अच्छी से गोटे प्रिटेंडेड एजेंट माने से सी को सेल करला आलगु बी गोटे ओरिजिनल एजेंट हिसाब रे काम करला तो एडी कौन हैला से बाउंड हैला से कॉन्ट्रैक्ट. A entrusts B with negotiable instruments in blank हैला गोटे ब्लैंक चेक टी दोछ. B sells them to C in violation of the private orders from A. The sale is good. हैला तो से कौन कहू जानछ ना अल्टीमेटली से कहू जो प्रिंसिपल दा दो निकी जिंस जागो से एनालिसिस करिया कथा कि से लोक एंट्रस्टेबल ना नाही से जदी एनालिसिस करनी ता मुंड माने मन इच्छा दे दोची विश्वास कर दोची तो दी किछि भूल होची तो दिस पर्सन इज स्टिल लायबल बुझिला ना नाही खाली एतिकी जिंस मन रो काहेंगे कहले पास्ट 5 इयर्स रे ए पर्टिकुलर प्रिटेंडेड एजेंट बिसरे किछि क्वेश्चन आसनी तमरा एजेंसी फंक्शंस बिसरे आस्थिला एजेंट रो ड्यूटी बिसरे आस्थिला तो अल्टीमेटली ए दीडा एग्जांपल बस देखिबो आ इफेक्ट रे कोन हबो ऑब्वियसली वॉइड आगा हबो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड जोडी के आसला तो देखो से कोन कोची misrepresentation made or frauds committed by agents acting in the course of their business for their principals have the same effect on agreements made by such agents as if such misrepresentations or fraud have been made or committed by the principal. But misrepresentation made or frauds committed by agents in matter which do not fall within their authority do not affect their principals. देखो केते फालतू जिंस से कोची माने जदी कॉन्ट्रैक्ट भितरे किछि जिंस अछि जोडा कि फ्रॉड हला तो प्रिंसिपल इंटरफियर करियो. कॉन्ट्रैक्ट बाहर एजेंट रो निज पर्सनल लाइफ रे किछि फ्रॉड हला तो प्रिंसिपल कोन इंटरफियर करियो कि नाही तो से सेडा कोची कि जोडा अथॉरिटी भितरे अछि माने मटेरियल फैक्ट्स टू द कॉन्ट्रैक्ट किछि भी जदी मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड हला देन ओनली जे हमर माने ये अछि प्रिंसिपल अछि से बाउंड हबो एक्शन नेबा पई. आ मते को मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड हले कॉन्ट्रैक्ट कोन हबो वेरी गुड कोन हबो void हो voidable हबो किबा void डायरेक्टली void हे जिवो फ्रॉड केते केस रे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप रे तो एटलीस्ट सेडा void हे जिवो डायरेक्ट बिकॉज़ ता पाखर अथॉरिटी अछि. अच्छा देखो voidable केबे हबो जानछ ना when the parties two parties are of equal status बुझि पाला equal status ताकि जण equal status रे लोक जण कंपीट करछन तो दी जण पाखरे सेम राइट अछि void करिया पे बट एडी कोन प्रिंसिपल जे भी अछि हायर अथॉरिटी एंड एजेंट जे भी अछि लोअर अथॉरिटी तो डायरेक्ट सेडा void हे. Okay, it's a clear point of distinction. So with this we complete Indian contract. ठीक अछि. Thank you.